Hello friends, my name is Stuti and today we will going to discuss 4 variable K-map simplification. So in this video we will be seeing how we will going to solve the Boolean algebraic expressions or the functions using 4 variable K-map. So starting here with the SOP form का हमने यहाँ पे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर दिया है. 4 वेरिएबल्स हैं, दैट इज A, B, C, D और फंक्शनल और इसके जो इनपुट्स हैं ये 0, 2, 5, 7, 8, 10, 13. सेम इज हियर 10, हियर 13 इज मेंशन्ड बट इट इज मिसिंग लाइक M13 इज देयर हियर एंड देयर इज D. सो ये इसके मिन टर्म्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ये इक्वेशन के फॉर्म में अपनी अलजेब्रिक वेरिएबल्स दे दिए हैं. इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया. प्लस हमने यहाँ इसको टेबुलर फॉर्म में भी मेंशन कर रखा है. ऑल दी वेरिएबल्स दैट इज 0 2 सी 0 1 2 देन इट इज लाइक 5 5 देन 7 8 7 8 देन 10 and 13. All are marked as 1. Why? Because this is an SOP form. So let's start marking them in the K-map. Now this is a 4 variable, so we will mention A, B here, then C, D here. It is all your choice where you want to mention. You can mention A, B in the above section and C, D downstairs also. Now 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 and 1 0. ठीक है, ये मेंशन कर दिया. नाउ नंबरिंग ऑफ द सेल 0 1 2 3 no this is 3 and this one was 2. Okay, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okay, we have marked all these. Now what is there? We have to mark the cells. अब हमने अपना मैप बना लिया, कंसिडर कर लिया, 4 वेरिएबल मैप बन गया हमारा, उसकी सेल्स को मेंशन कर दिया. अब हम इसमें प्लेस करेंगे वैल्यूज़. जस्ट स्टार्टिंग विद 0, तो 0 है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा. 0 देन 2 2 देन इट इज़ 5, हियर इज़ 5 5. Now 7 then 8 then 10 10 10 and 13. Okay, 13 here it is. ये हमने मार्क कर दिए वैल्यूज़. Let's start grouping the biggest ones. Let's see. अभी तो हमें अगर कोई बिग वन का ग्रुप नहीं दिख रहा, अगर हम यहाँ देखिए तो इनका हमें ग्रुप दिख रहा है. This is the option. फिर इसके लिए भी हमारे पास क्या ऑप्शन है, ये हमने ग्रुप करा. ये अब हम ये देखें कॉर्नर्स में हमारे पास 4 रह गए, तो यहाँ पे हमारी कौन सी चीज़ आ गई, हमारी कॉर्नर ग्रुपिंग. व्हाट इज़ देयर, कॉर्नर ग्रुपिंग आ गई, तो ये हमारा एक बन गया. तो इन ऑल वी हैव 3 ग्रुप्स. नाउ लेट्स सी दी कॉमन वेरिएबल्स इन दिस. लेट्स सी इन दिस फर्स्ट वन फर्स्ट. द कॉमन वेरिएबल क्या है इन दोनों के अंदर, अगर हम देखें तो इसमें 0 0 1 0 0 इज कॉमन, दैट इज B bar इज कॉमन. एंड हियर 0 0 एंड 1 0 1 0 that is D bar is common. What we will going to do is, let's see the common variable over here 0 1 and 1 1. यहाँ पे 0 1 है तो 0 1 कॉमन है. यहाँ पे 0 1, ये 0 1 का मीन्स हो गया यहाँ पे A bar and B. नाउ इधर क्या कॉमन है अपना, C D and C D D कॉमन है. ओके, 0 1 1 1 के अंदर 1 इज कॉमन, 1 इज D. नाउ इन दिस वन, इसके अंदर अगर हम देखें क्या है, सॉरी, इन दिस इट इज लाइक 0 1 1 1 1 is common means B is common. Okay, now in the above one is 0 1, that is C bar and D is common. Okay, C bar D. Okay, now the solution of this is basically B bar D bar plus A bar B D plus
B C bar D bar. So you can see how easily we can solve the equation using K-map. This was the SOP form and this was the simplified or minimized expression for this particular question. Let's come to the POS form. Starting with the POS form now, let's see, there is the question. Here the question is mentioned, max terms mentioned है हमारे 0, 1, 2, 4, 5, 7, 10 and 15. 15 is here, this is mentioned here. Now ये उसकी equation given है with the variables. All the things are mentioned. Now check, that is 0, 1, 2, 4. 0, 1, 2, 4, 5, 7, 10 and 15. All are marked as 0 because we will be considering, in POS we will be considering zeros. Now mentioning them 0, 0. Okay, wait. Here the variable will going to increase, that is D. 4 variables will be there. Now mentioning here A, B, C and D, mentioning them, and here it is like 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. This is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, this is done. Now number them. It's like we have, as we have mentioned, 0. Then 1 के अंदर हमने 0 मेंशन करा, 0, 1, 2. Now then is 4, 5, 7 and 10. 7, 10. Where is 10? Here it is 10 and 15. Where is 15? Here it is. Wait, 10. Okay, let's see what are the groups here. See now how we can group them basically. ये हमने mention कर दिया, सारे numbers को mention कर दिया. अब now we will going to start grouping them. Now grouping के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये हमारे 4 implicants का हमें वो मिल रहा है. We will going to group this one, then we will going to group this, then there is an option to group these. All the zeros are covered and we can, it's like I haven't mentioned, but you can mention it like here, or other cells will be having ones. Okay, so now coming to this only. अब इनके हम common variables निकालते हैं. इसका common variable हमारा क्या होगा, that this is like 2, तो 0, 0, 1, 0, 0, 0 and 1, 0 means 0 is common, that is B here. So in this it will be not B bar but it will be B. Now here what other variables are common, 1, 0 both. 1 means bar, C bar and 0 means D. D यहाँ आ गया, ये इसका simplified version हुआ. Now इसका हम निकालते हैं, क्या होगा, 0, 0, 0, 1. 0 is common, that is A is common, and here 0, 0, 0, 1. Again 0 is common, that is C. That is C. Now in this, इसके अंदर अगर हम देखें तो in this 0, 1, 1, 1, 1 is common, that is B. That is B bar. 1 common है means B है, और B है और 1 है means it will be B bar, plus 1, 1 means C bar plus D bar. Why? Because for 1 we are considering complement here. These are the 3 variable
simplified versions. Now A plus C, B plus C bar plus D, and the next is B bar plus C bar plus D bar. This is the answer of the above expressions. So this is the way we will going to solve the 4 variable Boolean expressions using K-map. Thank you.